लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी वाई वर्किंग ऑन स्केल एंड नॉन ट्रिवियल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, हाउ एंड वाई डू यू नीड टू बी अनफॉरगेटेबल, और तीसरी चीज़ ये कि समवन इज ऑलवेज वॉचिंग. So this is roughly about 2015, 2016. All of this happened to be on the 2015 and 2016 time horizon. उससे अगर आगे move forward करते हैं तो here's basically the first lesson that I learned in that time. और वो ये है कि ज़िंदगी में ना कभी भी there's no get rich quick or get successful quick scheme. कभी भी ऐसे इस तरह की कोई स्कीम एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर कोई बंदा कह रहा है कि एग्जिस्ट करती है then he is actually getting rich off of you. तो मतलब उसकी गेट रिच क्विक स्कीम आप हैं. और ये अंडरस्टैंड बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी बंदा आपको कन्विंस कर रहा है ना कि यार नहीं ये एक चीज़ है मेरे पास, इसको हम करेंगे ना तो वील गेट रिच, तो वो या तो वो उसकी अपनी पॉन्जी स्कीम है या फिर अपना उसका अपना गेट रिच क्विक का तरीका है. एंड आई रियलाइज दिस एट दैट टाइम, जब वो मतलब एट दैट टाइम बिटकॉइन वाज हिटिंग रियल हाइट्स एवरी डे. इट वाज लाइक 20%, 10%, 5% इंक्रीज़ हो रहा था. आई वाज गोइंग फ्रॉम आई थिंक $2,000 से लेके अप अंटिल $20,000 पर बिटकॉइन हो गया था. And all of that was happening at that time. So it's only natural कि जब पहली दफ़ा आपके सामने इस तरह का कोई huge wealth creation जैसे भी सूडो है या नहीं है हो रही हो, तो it's really hard to believe otherwise. So at that point, when it hit I think that $22,000 mark, I also convinced my friends and also myself as well. I invested काफ़ी significant amount that I could lose in Bitcoin. Or roughly I think a couple of months from that time it lost I think 60% of its value. And yeah, that happened. So that was a really important lesson for me in that sense कि यार ज़िंदगी में ना कभी भी कोई get rich quick scheme नहीं है, इसी तरह get successful quick scheme भी कोई नहीं है. कोई भी आप पकड़ ले ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम्स, आपको शायद लगता हो कि वो ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं होता. उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है. एंड आई लर्न दैट फ्रॉम माई मेंटोर्स, नॉट बिकॉज दे टोल्ड मी कि इस तरह होता है, बिकॉज आई सॉ देम डू इट. सो आई सॉ Arbisoft go from 65 people up until 600. So I saw them grow 10x. एंड आई सॉ कि उसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, पर्सनल चेंजेस, प्रोसेस चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस ये सारी करनी पड़ी थी. एंड हाउ लाइक डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट पुश बैक्स होते हैं, रेजिस्टेंसेस होती हैं वगैरह सारा कुछ. सो दैट वाज काइंड ऑफ अ वेरी पेन्स टेकिंग एंड इटरेटिव प्रोसेस इन दैट सेंस. तो अगर कोई आपको कह रहा है कि यार 60 से 600 जाने का मुझे एक सीक्रेट फार्मूला मिल गया है और ये हम एक साल में कर सकते हैं, तो वो मतलब यू शुड रन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम दैट. The same happened with the crypto and the blockchain fiasco and the Web3 fiasco that we've seen in the last 3 to 4 years. के a lot of hype, a lot of people claiming यार ये get rich quick scheme है, and then all of it bursting as a bubble. So generally, so I've learned it kind of the hard way कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है ना, तो it is only a matter of time before that bubble will burst. And it will just implode on itself. So yeah, run as far away from that as possible. Do not do that. Do not go that way. Right? तो सक्सेसफुल होने में भी ऐसा ही है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है, एक पेनस्टेकिंग कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है. तो इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको पूरा रास्ता तय करना है, तभी आप कर सकते हैं, वरना उसके अलावा कोई तरीका नहीं है. The next thing, so now like we discussed in the last video, okay, then I got offered this role for leading a team of roughly 30-35 people. So like really, it was really new for me in that sense, or I didn't have any experience at all of leading large teams, of managing large projects and everything. So एक तो I think उसमें से lesson ये है मेरे, मतलब again मतलब luckily that happened to me. तो मतलब I said yes and then I took it on, and that was kind of the best decision that I've done in my life in terms of my career. कि let's say आप एक X amount of people को मैनेज कर रहे हैं, and now you get offered कि यार 10x लोगों को मैनेज करना है,
सो आई कुड हैव सेड कि नहीं यार मुझे नहीं लगता मैं कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि इससे नुकसान हो जाएगा कंपनी का या मेरा नुकसान हो जाएगा वगैरह. बट choosing to do that has been so rewarding for me. अपने आप अगर आप अपने जो आपके ज़हन में आपकी कैपेबिलिटी होती है, आप उससे भी ज़्यादा अपने आप को जब पुश करते हैं, तो अगेन मतलब जब अपना थ्रेशोल्ड पुश करते हैं तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती जाती है बाद में, एंड देन यू काइंड ऑफ लेवल अप टू दैट लेवल जो उस रोल की या उस की रिक्वायरमेंट होती है. So yeah, that was like super helpful for me in that sense, and in that project I essentially learned कि यार how do you bring out the best in people, how do you help people to become their best selves. और I think if you want to do anything of your own तो ये बहुत important skill है. एक तो ये बड़ी important skill है कि you have to convince people to work with you. उसके बाद दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है ना वो ये है कि you need to learn how you can bring the best out of people. काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं वो like 95% of the people don't know what their potential is, and your job as somebody who's doing his own thing is to bring out the best in them. उन लोगों को भी नहीं पता होता उनका potential क्या है, लेकिन your job is to like push them. Just like in my case, I was pushed by my leaders कि यार you're doing this, do 10x of this. So like doing this in your team is super important. और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मतलब you should not like start your own company, you should not do your own thing until you've learned this. क्योंकि normally what I've found is कि people want to like the top 20% of the people जो अपने potential की extreme पर जाते हैं, and then there's 60% of the people in the middle जिनको अपना potential नहीं पता होता और वो day to day they're living their lives and they're happy with what they're getting, and then there's the bottom 20% of the people जिनको आप इनके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते. लेकिन this 60% of the people who's like the majority in this chunk, like your job as a leader or a CEO or somebody who's running the show is to bring out the best in people and throw as many people into the top 20% from this chunk as possible. So ये मेरे ख्याल से एक non-negotiable skill है for being a CEO, and I'm really glad that I learned it on the job. Again वही जैसे मैं बात करता हूँ कि learning on the expense of somebody else is way better than learning it at your own expense. If I hadn't gotten that experience of leading 30 people and try to bring the best out of them, तो मेरे लिए बाद में जब when I started my company तो मेरे लिए वो सारा कुछ मैं अपने एक्सपेंस पे अपनी गलतियाँ करके सीखता. That would have cost me financially, mental torment अलग होता, और जो growth में sacrifices होते वो अलग होते. So it is very important कि आप किसी और के ही एक्सपेंस पे, यानी कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ऑफकोर्स जो आप गलतियाँ करेंगे ऑफकोर्स दिल रिफ्लेक्ट ऑन योर करियर एज वेल, लेकिन उसका सारे का सारा ब्रांड जो है, उसका जो सारा एसेंशियली नुकसान जो है वो तो उसी कंपनी का होगा ना. आपको तो बियॉन्ड जस्ट सम फीडबैक आपको और कोई नुकसान नहीं होगा. वर्स्ट कम वर्स्ट ही होगा कि यार यू विल बी टोल्ड टू लीव एंड देन गो समवेयर एल्स, विच आई थिंक इन CS इज़ वेरी लेस लाइकली. सो इट इज़ वेरी आइडियल कि अगर आप दूसरों के एक्सपेंस पे गलती कर सकते हैं और आपके पास लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आप गलती करोगे तो यार वी आर हियर फॉर यू. Just like in that case कि अगर when I went from 3 people to 30 people, so I had the confidence of my leaders. They said कि यार कोई बात नहीं, if you're figuring it out, कोई गलती होगी तो we are here for you, कोई मसला नहीं. I actually did a few mistakes and they were there to back me, and that's great. क्योंकि मतलब like if you're working with good leaders, उनको भी पता होता है कि यार ये चीज़ें नॉर्मल हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, कोई बात नहीं. So yeah, so summing it up ये कि inspiring people and getting them to their best potential with, of course, which they are oblivious about, जो उनको नहीं पता, is very important if you have to run your own show. So do that, put yourself in a situation, I think, where you are able to do that, क्योंकि वो बहुत important चीज़ है, right? And the third thing which I'm really proud of, मतलब it was really very
painful at that time. Now we're talking about 2019ish, 2020 वाला time है, pre-COVID times है. And at this point now, as I said, I'm working with a team of 30 people. We are working day in, day out, very aggressively, very tight deadlines, very unreasonable customer. This is basically the thing which helped me, which literally helped me build mental tenacity. Like working on this project with 30 people really helped me build mental tenacity, because everything about this project was challenging. Number of people, engineering challenges alag, negotiating with the customer वो एक अलग चीज़, and coincidentally the customer for this project was super unreasonable. Like they were like very volatile in that sense कि unreasonable customer की 2-3 निशानियाँ क्या होती हैं. सबसे पहले ये कि they're never happy. ठीक है, आप ज़बरदस्त चीज़ भी करते हैं तो उनकी हैप्पीनेस इंस्टेंटेनियस होती है, अगले दिन वो भूल जाते हैं कि यार आपने ये किया. दूसरी चीज़ ये होती है कि दे डोंट कीप देयर वर्ड. यानी कि हो सकता है कि आपने एक हफ़्ता पहले एक चीज़ डिसाइड की हो, आपने डॉक्यूमेंट की हो कि यार हमने एग्री किया था, लेकिन डिसाइड नहीं यार हमने तो ये बात नहीं की थी, या फिर हमारे बिजनेस गोल्स चेंज हो गए हैं, तो नाउ वी वांट टू डू समथिंग एल्स. ठीक है. और तीसरी चीज़ ये होती है कि दे पुश यू बियॉन्ड योर लिमिट्स इवन दो दे नो कि यूर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड. मतलब दे अनरीजनेबली पुश यू to your extremes, or without caring कि यार how this will work to their own detriment in the future. So मतलब वो very short sighted, वो सिर्फ आज का सोच रहे होते हैं, अगले हफ्ते का या अगले 2 हफ्तों का सोच रहे होते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते. एंड चौथी चीज़ अनरिजनेबल कस्टमर की होती है if they're using foul language, they're very aggressive in their communication. तो with this customer ये 4, इसके अलावा भी बहुत सारे challenges थे, and I actually got to so like being leading that team here was me, this was the customer, and this was the team. So my job literally was to like stop everything from here, from reaching the team, and like from the team negotiating with them and then communicating it back to them. So yeah, I think working with unreasonable customers, ज़्यादातर लोगों से शायद इसका चांस ना मिले, लेकिन I think working with this unreasonable customer helped me build the mental muscle to understand unreasonable requests, helped me so much in negotiation, क्योंकि unreasonable लोगों से negotiate करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन impossible नहीं होता. So like I had the help and the encouragement of my leadership, और उसको use करके then I negotiated a lot of stuff with them. And then the third thing is कि trying to keep them happy and trying to keep the ship afloat. Like that is also super important. So like I think so yeah, if you ever get a chance to work with an unreasonable customer, तो वहाँ पे 2 reactions हो सकते हैं लोगों के. एक type of people हो सकते हैं कहते हैं यार कि ये तो unreasonable है, मैंने तो काम नहीं करना है इसमें. Sure, you can do that, लेकिन that is the easy way out. मुश्किल काम क्या है कि you stick in that situation. किसी भी सिचुएशन में, आपके पर्सनल लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, सबसे आसान काम होता है to just cut it off, ख़त्म करना सब कुछ, पर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह सब कुछ. मुश्किल काम होता है टू एक्चुअली स्टिक विद इट एंड रफ इट आउट एंड फिक्स इट. तो आई एम सो ग्लैड आई चोज दैट पाथ, एंड देन दैट हेल्प्ड मी कि आपने मुश्किल कस्टमर से नेगोशिएट कैसे करना है, आपने किस टाइम पे उनको क्या न्यूज़ देनी है डिपेंडिंग ऑन देयर मूड, आपने किस पॉइंट पे कौन सी नेगोशिएशन टैक्टिक यूज़ करनी है, आपने अपनी रिलीजेस को, अपने फीचर्स को, अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने रोड मैप्स कैसे बिल्ड करने हैं, आपने चीज़ों को डॉक्यूमेंट कैसे करना है कि सो दैट दे बिकम बुलेट प्रूफ, आपने रिटन कम्युनिकेशन को इतना कंसाइज और इतना ऑब्जेक्टिव कैसे करना है कि इट इज़ नॉट लेफ्ट टू इंटरप्रिटेशन एंड एवरीथिंग. सो दैट I think has really helped me, and I still remember कि when I was leaving Arbisoft, so yesterday I said कि yeah, you've gone through this project, so every project that you do from here will be super easy for you, so I think you're really ready for it in that sense. So yeah, I mean, so वो यही है कि मतलब if you've dealt with the worst at somebody else's expense, तो इसके बाद जो भी होगा in your life, अगर at your own thing, then that would be still be lower than what the worst is, and you'll have the whole toolkit to deal with it. आपके पास सारे, क्योंकि अगर आपने वर्स्ट को हैंडल किया हुआ है तो आपके पास बैड को हैंडल करने की सारी टूल किट होगी,
और चीज़ें अगर वर्स्ट तक जाती भी हैं आप उसको पहले प्रीएम्प्ट भी कर लेंगे, और अगर वर्स्ट वाली चीज़ हो भी जाती है तो आपको फिर भी पता होगा यार मैंने I've done this before, I can probably do it again as well. So that is basically the third point for today's video. Okay, like working with outright unreasonable customers, while it might sound counterintuitive, मतलब आपको लगता होगा कि यार ये कैसी एडवाइस है कि यार अनरीजनेबल लोगों के साथ काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू हैव टू डू योर ओन थिंग, क्योंकि आपको नहीं पता, you might find a customer who's paying you really well, who's very important for your company's growth, but they are outrightly bad human beings or bad customers. So maybe you need to take on those customers, maybe you don't, वो आपकी मर्जी है, लेकिन you should at least know how to handle these customers. You should know कि उनको के वर्स्ट को आपने negotiate कैसे करना है. So yeah, that's it for this video. We discussed basically कि यार ज़िंदगी में कभी कोई गेट रिच कोई स्कीम नहीं होती, या गेट सक्सेसफुल कोई स्कीम नहीं होती, एंड हाउ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन पीपल इज़ अ नॉन नेगोशिएबल स्किल. अगर आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते उनके पोटेंशियल तक रीच करने में, आप उनको पुश नहीं कर सकते उनके पोटेंशियल रीच करने में, तो यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट बिफोर यू स्टार्ट योर ओन थिंग. और तीसरी ये कि वर्किंग विद outrightly unreasonable customers and even unreasonable teammates is a very good training for you to do your own thing, क्योंकि you don't know what you will deal with once you do that. और unreasonable मतलब अच्छी टीम के साथ अच्छे कस्टमर के साथ तो सब हर कोई कर लेता है, बहुत ईजी होता है. बुरी टीम के साथ अच्छे कस्टमर के साथ, या बुरी टीम प्लस बुरे कस्टमर के साथ करना बहुत मुश्किल होता है. So yeah, I hope this is valuable to you, and yeah, I will see you in the next video.